Hi everyone. Are you doing well? I'll just put up my book with you all. It's fantastic to have you all here. It's wonderful to be connected, and what a move Nifty has been giving. Are you seeing the morning levels? Hi magic? Everyone. Are you? I'm just checking if we are live everywhere and if you are the levels are working, right? The levels are phenomenal. It's working. Whether it's Bihar election, it's no Bihar election, it is something that is just working. And I'm sure I'll open up the tweet. Are you enjoying these levels and the short tweets which I'm making? The Josh, I'm sure, will be high. Bhav Bhagwan Che is the proof. मतलब आप सभी के सामने मैंने एक प्रूफ रखा है आज के दिन में. ओके, आज के दिन में एक प्रूफ क्या था मैं आपको ट्वीट ओपन करके दिखाता हूं. मेनी ऑफ यू हु आर नॉट फॉलोइंग द ट्वीट एंड डायरेक्टर साहब, आई डू नॉट हैव द क्यूआर कोड ऑफ द व्हाट्सएप. प्लीज गिव मी द क्यूआर कोड so that people can join the WhatsApp, and please ensure you also share the link if in case I forget. तो पहले तो हम चलते हैं कि क्या लेवल था, फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ और कैसे मूव आया. ये मूव कैसे प्रिडिक्ट हो सकता है, ये सारी चीजें मैं मेंटरशिप में बताता हूं आपको. आने वाली क्लास जो हमारी मेंटरशिप की होगी दोस्तों, उसमें ध्यान रखना, मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा. मुझे याद दिला देना कि कैसे ये लेवल्स डिराइव होते हैं और कैसे 5 मिनट चार्ट पे देखिए इस लेवल्स को डिराइव किया जा सकता है. Okay, Rasika, you are also here. I did not move from the screen to witness the reversal at the time cycle. That's the beauty of cycles. And today Nifty became Bihari at 3 p.m. It's all over the place. And I'm just going to share across the tweet. Okay, just give me a second. 1 second. Where is the tweet gone? I'm just going to share it across to all of you and read it out loud. कि क्या देख रहे थे हम, क्या हुआ. एंड देन लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड. भाव भगवान छे, समय बलवान छे, and trader पहलवान छे. We have to understand that concept, and let's just look at how it behaved. So I'm just going to share across my screen very quickly. यहाँ पर हसन लिख रहे हैं, सर आई डोंट नो हाउ टू प्रेज यू. मॉर्निंग ट्वीट लेवल्स हैव परफॉर्म्ड अ मिरेकल टुडे. It's performing miracle every single day since I don't know how many days. If you are following that, this is the tweet. मॉर्निंग में लिखा था कि 26,020 या तो ब्रेक हो जाए तो हम बाय करेंगे, या तो 25,730. 25,730 से 760 का रेंज, इसका एवरेज मिडल आता है 25,745. अगर ये रेंज है, रेंज का एवरेज अगर मैं देखता हूं 25,745. पॉजिटिव रिवर्सल अगर वहां से मिला तो टारगेट आता है 25,950. बराबर है. निफ्टी का हाई और लो कितना था? लेट मी गो ऑन द चार्ट नाउ. 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं. 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है. आई एम गोइंग टू शो इट अक्रॉस यू. इट इज अनबिलीवेबल डिस्पाइट ऑफ द इवेंट. व्हाट आई वांट टू टेल यू, इट वर्क्स. then that's the proof I want to give it across to every single one of you. निफ्टी का लो बना, निफ्टी का लो बना यहां पर अगर आप देखेंगे 25,740. निफ्टी का हाई बना 25,940. कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? 25. और कितने बार, मतलब सोचने वाली बात है. द सपोर्ट जोन विच वॉज गिवन, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? The support zone which I gave once, twice, thrice, four, five times in the day, that zone, this was the zone. क्या zone था ये? 25,730 to 25,760. That's the zone. Are you able to see the screen here, every one of you? दिख रहा है आपको? 25,730 to 25,760. That was the zone. Target 26,950. It is unbelievable. And the best part is
It's not a normal day, right? It's not a normal day. Or if you go and ask someone outside, he will say, मार्केट तो यार ऐसे थोड़ी चलता है, मार्केट की रैली प्राइस इज बढ़ा है बिकॉज ऑफ द बिहार इलेक्शन आउटकम, 3 बजे रिजल्ट आ गया। यार बोलने दो, रिजल्ट तो सुबह ही पता था, रैली तो जब करना था तब हुआ। एवरीवन इज एबल टू सी द स्क्रीन हियर? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन हियर एवरीवन? आई जस्ट कंफर्मिंग, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अक्रॉस, आर यू एबल टू सी इट? ओके, फैंटास्टिक। एंड दिस मूव, ओके, यहाँ पर बहुत क्लियरली एवरीवन इज एबल टू सी द स्क्रीन एंड आई हैव नॉट स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग गाइस। Director Saab, can you please make a note of these things, please, so that it's very crucial for us. These things are very crucial for us. We want to record, we want to show people how it works. Okay, Nifty morning, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, do you want to know the secret recipe of how these levels are derived? Or I shall keep it only to my Brahmastra participants. I mean, I'm just thinking. I mean, I don't want to reveal too much because I am teaching them. I just don't want to give you the levels. I want you to learn. That is very, very important. Okay. Nifty morning tweet low given was 25,730 and upside target of 25,950 levels. Despite of Bihar election 2025, low made at 25,740 and high at 25,950 cannot be more accurate. Showing now. Okay. So चलिए अभी शुरुआत करते हैं यहाँ से. Let me just ask my team if they are able to. शरद को इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज इंफॉर्मेशन दे दीजिए उन्हें. डायरेक्टर साहब, आर देयर पीपल हु कैन प्लीज रिस्पॉन्ड? देयर आर बहुत सारे चैट आ रहे हैं. आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड. चार्ट लिया क्या किसी ने? कैन समवन प्लीज हेल्प मी हियर फ्रॉम माय टीम? कैन यू हेल्प मी टू टेक द चार्ट and to confirm back to me? Can you do that, please? And I need everyone to be here with me. What I want to move on from here, I want to go and take a very quick poll. मैं एक पोल लेना चाहता हूं आने वाले वीक में. व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द निफ्टी ट्रेंड बाय कमिंग फ्राइडे? एंड देन वी विल डाइव डीप इनटू व्हाट्स गोइंग टू हैपन फ्रॉम हियर. और उतना ही नहीं, मैंने आई थिंक आई आल्सो ट्वीटेड अक्रॉस, आई एम टेकिंग अ पोल हियर. I'm also tweeted across one very simple tweet, which was exactly the level was, the tweet was at 253. I just want to share that also again. And it's not about boasting about myself. This is just to show you it actually works. This is just to showcase to you it actually works. This tweet was published at 253. And see what was written here. Precisely in the zone, third time it tested and reversed up, break about to resume the up move. And look at it. That was 2:53 p.m. And let's go on the chart and see what happened next. From 2:53 p.m., what happened next? That's the chart. This was 2:53 p.m. And see here, market obliged. Okay, होता है, अगर सरस्वती माँ की कृपा होती है तो ऐसा होता है. Is what I would say. It's not me. It's the blessings. I'm going to end the poll now. Many of you think markets are going to go up. Wow, that's a very, very polarized view. One-sided. 95% of the poll is saying market is going to go up. Okay. Okay. यहाँ पर that's very interesting. I'm going to stop the poll now. And we want to move and understand. Just a second. Over here, let's go on the daily time frame chart. Okay. And let's look at the weekly time frame chart. That's the weekly time frame chart. Now, if you are
If you are looking at this weekly chart, can I say as per the 3 candlestick rule, what is the bias? As per the 3 candlestick rule. I'm asking you all, as per the 3 candlestick rule, what is the trend? Bullish. Done. Daily time frame. Can I say the daily time frame trend still remains bullish? Every one of you. Daily time frame still remains bullish. Done. Can I say the hourly time frame also changed to bullish? So can I say that as per the concept of simple price action, my weekly, daily, hourly, all are in sync. Okay. All are in sync. Are you with me? Every one of you? From wave perspective now. From the wave perspective, if we are looking at it, what we got as 440, 25 440 3 दिन पहले जो ट्वीट किया था, which was on Monday, 25 450 का लो बनाया मार्केट ने और वहीं से रिवर्स किया. 25 730 वही लो बनाया, 25 740 वहीं से रिवर्स किया. Which means this is the precision of a wave pattern, the way it is working. And precision of a wave pattern, the way it is working. Now, if I have to forecast, okay, if I have to look at this market and forecast, my daily time frame shows that prices are on the buy side, and this is wave G ongoing. Okay, wave G will usually mimic wave A. Wave G will usually mimic wave A. However, wave A was event driven. मतलब बहुत सारे इवेंट्स थे, ट्रम्प था, ये था, वो था, सो पूरा इक्वालिटी नहीं चलेगा. So if I have to measure with a Fibonacci forecast, trend-based Fib extension, maybe 50% of this should come from here, or 61.8%. So if I forecast on the upside, 50% of the move. Okay, 50% of the move on Fibo, if I want to forecast. Where is the Fibo style? 50% is what I want to use of the entire movement, 0.50. My target comes to around 26,600. Okay. I'm again stopping the sharing. किन किन लोगों को शायद चार्ट नहीं दिख रहा है, I'm going to restart my sharing again. Are you able to see the screen here, every one of you again? ट्विटर लिंक शेयर कर दीजिए. क्यूआर कोड मैंने बोला था, अगर आपने शेयर किया है, क्यूआर कोड नहीं किया है, so that I can show people about they can join. So if you are looking at it, are you able to see now? Are you able to see now? There is some issue with some people who are not able to see. If you are looking at it, overall, if our move is going to be 26,600, we talked about an 800 points movement when prices were near 26,600. मैं क्यों बोल रहा हूं? बेसिस ऑफ दिस फोरकास्ट. ओके, यहां से अगर हम देखेंगे, ऑलरेडी 800 पॉइंट्स का मूवमेंट हमने बात किया था, एंड लो से अगर हम देखेंगे 800 पॉइंट्स मूवमेंट तो ऑलरेडी यहीं पे हो जाता है. But still, there is a room of another. From here, we have another movement which is pending on the upside. As far as I am seeing the chart, from this level, there is another movement until 26,600, which is another 650 points of movement is what I think we should have at minimum. Stop loss आपको लगाना होगा. Okay. And
यहाँ पर जो लो बना है आज के दिन में वो इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, which is near the level of which is near the level of 25,740. Now let's go on 1 hour time frame chart and understand the wave pattern in detail. Do you want to understand wave pattern in detail? This is NeoWave perspective. I'm not talking about Elliott wave. I'm talking about NeoWave. From a NeoWave perspective, I'm talking about this. यहां पर अगर हम देखेंगे ओवरऑल movement from here started wave F. Okay. Now this leg has taken 17 candles. Against this leg, this movement has taken only 8 candles, which means time taken by this fall so far is less. Also one more thing, जो भी movement 3 o'clock के बाद में आता है, that movement might not be reliable. Okay, so the movement which comes after 3 is not reliable. It's not reliable. So I'm going to be a little cautious about this movement. However, this level is very reliable. So 25,740 मेरे लिए break नहीं होना चाहिए. And this moving average is derived by using a time cycle concept. ये जो 2040 का moving average नहीं है. This moving average is 42, which is derived using some concepts of time cycle. So from this level, we are seeing an upside move, which means that this pattern, are there penties here, Brahmastra participants? Can you tell me which pattern this might be? The difference between Elliott and NeoWave is that NeoWave is about advanced patterns, advanced rules, those concepts, and Elliott wave is three rules for impulse and basic patterns, which is there. So Neo is much more accurate. It's an extension of Elliott wave is what I can say. So it will form a diametric pattern. Fantastic, Rahul. क्योंकि ये I'm not talking from the other perspective. Rahul, Vaibhav, excellent. It's going to be diametric pattern because in case of normal pattern of flat or zigzag, B wave को ज्यादा टाइम लेना चाहिए था. B wave ने कम टाइम लिया है, and so it is a diametric pattern. Clear है, every one of you? Are you able to understand that? Very, very simply. Now, with this diametric pattern, if I apply on a 15-minute chart, I mean अगर आप 15-minute chart के ऊपर जाके देखोगे, बहुत ही जबरदस्त साइकिल वर्क कर रहा है. मतलब इट इज सो पिन पॉइंट. आर देयर पीपल फ्रॉम काल चक्र एंड मेंटीज हु आर अप्लाइंग इट? तो ये डायमेट्रिक पैटर्न है और इसलिए वेव बी है और यहां पर सी वेव आएगा विच इज गोइंग टू बी 61.8% ऑफ वेव ए. तो मेरा इमीडिएट जो फोरकास्ट होता है इस पैटर्न के हिसाब से, माय इमीडिएट फोरकास्ट एज पर दिस पैटर्न is going to be basis of trend based fib extension यहां से which will be 26,090 तक तो जाना चाहिए. That's my take at minimum, and it can also extend further. So we will see one step at a time unless and until the support of 25,700 is 740 is broken. Now I am going to go on a time cycle chart. Are you able to see the time cycle chart over here with an AK indicator applied here? Are you able to see that, every one of you? Okay. Now, if you are able to see this time cycle, can you see the precision in which the cycle has moved? Can you see the precision with which the cycle has moved? Are you able to see the screen here? And look at it. So look at this low and look at the rally. Look at the low. See the move. Look at the low on an event day.
I want to ask everyone one simple question. One simple question. यहां पर बिहार इलेक्शन है, निफ्टी ने लो बनाया 25,740 पे एट द लेवल वेर इट इज सपोज टू बी। प्राइसेस ने लो बनाया 1:45 पीएम पे, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे precisely at 1:45 p.m. as per the time cycle. I'm asking you all, how is it possible? Do you still think that event is moving the market? और भाव भगवान छे, समय बलवान छे। आर यू एक्सेप्टिंग द मंत्र? मेरा एक ही एम था दोस्तों, अगर मैंने ये मंत्र आप तक पहुंचाना है तो उसका एक प्रूफ देना है यहां पर। बट इज इट ऑलवेज? नहीं। इवेंट इज नॉट ड्राइविंग द मार्केट। निफ्टी फॉर्म्ड अ लो एट 1:45 p.m. precisely at 25,740 on the 43 period of time cycle. Despite of event, every single move is in rhythm. You know, time cycle is the rhythm of the market, rhythm of price and time. You cannot believe it. It is how it works. Okay? यहां पर व्हाट इफ एमजीबी, व्हाट इफ का क्वेश्चन तो जाने दो ना। व्हाट इफ थे जो चीज पास्ट में, सो सी आई एम गोइंग टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इफ जो है विच इज अबाउट द पास्ट इज जस्ट अ मेड अप सिनेरियो विच नेवर हैपेंड। व्हाट इफ Sachin Tendulkar wouldn't have got out? What if I just would have cut my trade 1 minute prior? So that what if is actually not valid because that's not the fact. What is the fact is what has happened and what you are seeing on the chart. तो इसीलिए जो हुआ है उसे देखना है, होने को प्रणाम है कहते हैं ना। सो वो देखना है हमें, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। एंड यहां पर अभी करना क्या है हमें? Once we can see that the price have reversed back on the upside, the swing high is taken out, the AK indicator is working simply super. And in everything, this is the AK indicator down there. This is the daily time frame chart. The AK indicator started turning up precisely at this point on the daily time frame chart, reversed on the upside. 1 hour time frame chart reversed on the upside. 15 minutes time frame chart reversed on the upside, that too from the time, which means that ओवरऑल जो मार्केट का पर्सपेक्टिव है वो बाय साइड पे टर्न हो चुका है। कब तक वैलिड है? इज इट 100%? नो, देयर इज नो गारंटी, प्लीज रिमेंबर दैट। एंड वॉट एवर वी आर डूइंग इज प्योरली लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, वो भी आपको ध्यान रखना। यहां पर अभी सबसे ज्यादा जरूरी एक और चीज को देखना है, वो है ओआई डेटा। शैल आई गो ऑन दी ओआई डेटा चार्ट? Shall I go on the OI data chart? Have you seen the OI data? What we want to see is big players activity. जो हमने ऑप्शंस मंत्रा वीकेंड पे किया था, that big players activity is what we want to really see. What is the big player doing at 26,000? 26,000 पे कर क्या रहे? और अगर आप कल का न्यूज क्या पढ़ेंगे मालूम है? मार्केट रैलीड शार्पली पोस्ट दी बीजेपी विन, एनडीए विन इन बिहार इलेक्शन विद अ क्लीन स्वीप। मैं क्वेश्चन पूछूं आपको, ये विन तो पूरे दिन में हो चुका था, राइट? What we saw at 9 a.m., what we saw at 10 a.m., what we saw at 11 a.m., we knew. And we were clear. By the time it is 1, we were knowing what are the numbers. Very clearly, we knew NDA was 200 plus. Are you correct? Are you in sync with me? Then what changed after 3? What changed after 3? What changed after 3? Nothing changed. Price is भाव भगवान से करना वही है जो उसे करना है. Nothing changed.
Now to justify this movement, news में आएगा. So time, everything has an auspicious time. Remember that one thing very clearly. Everything has an auspicious time. If price and time gets in sync, nothing can stop it. Can I ask you one more question here? Can I say that 50% tariff is still there on India and ticking time is ticking away? 50% tariff is still there. India-Pakistan war happened and again a terrorist attack happened. I'm assuming that. बिहार इलेक्शन हैपेंड, बहुत सारी चीजें हो गई. कैन आई से बैंक निफ्टी इज स्टिल नियर लाइफ टाइम हाई, टच लाइफ टाइम हाई, निफ्टी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई. कैन आई से दैट, मतलब जो भी हो रहा है, अगर इतना सब एडवर्स होने के बाद भी मार्केट वही है जहां उसे होना चाहिए, तो जब ये सिनेरियो इंप्रूव हो जाएगा, विच वी से इज द ग्लोबल सिनेरियो एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स इंप्रूविंग, don't you think that logic will suggest we are going to relative outperform despite of FII being the net sellers in 2025? If that's where we are, and if they turn into buyers, because they also have that fear of missing out big time, if they turn into buyers, it's going to be a crazy move. I'm not saying it's going to happen tomorrow. I'm not saying there is not going to be correction. What I am saying is simply look at the chart, simply apply these time cycles, apply the wave patterns, and see the magic yourself. It's a magic and it actually works. So screen मैंने बंद किया है, आप मुझे देख पा रहे हैं यहाँ पर. Before I move on to the OI chart, let me open up my OI chart. Let me open up my OI chart. And people who are there on YouTube, आपने ज्वाइन किया क्या? डायरेक्टर साहब आपने लिंक शेयर और पिन नहीं किया यूट्यूब के ऊपर. लेट मी जस्ट शेयर अक्रॉस द लिंक एंड पिन इट अक्रॉस. दे कैन ज्वाइन मी ऑन द Zoom platform. Just give me a second. I'm just going to pin it across on the YouTube. आप लोग Zoom पे जुड़ जाइए. यहाँ पर मैं आपको गो चार्टिंग का एक OI डेटा बताने वाला हूँ और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा. बिफोर आई डू दैट, व्हाट्सएप का लिंक सभी के साथ फिर से शेयर किया क्या, so that they can be there on the WhatsApp community, and I'm also going to share it across with you all. Let me just share it across with you all. Join करिए. I'm opening up the go charting OI data chart right now. Just in a second. Meanwhile आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करिए. ये QR और एक थम्स अप दीजिए मुझे अगर आपने ज्वाइन किया है तो. यहाँ पर let me, okay, I'm signed out. I'm just signing in again. And we want to look at this data. This data is going to be very crucial for us because if the call sellers are not panicking, which means we have to ensure to be careful. Okay, not raise our hopes. We need to be careful. Let me share across my screen. Okay, you people have joined. Okay, awesome. So let me just share across my screen here. Are you able to see the screen here, every one of you? This is open interest data. In this open interest data, now that's not very promising sign as of now. Are you able to see the chart? Chart नहीं दिख रहा आपको. Let me just reshare it across. I don't know. There is some problem with Zoom आज लग रहा है. Are you able to see the chart now? I've reshared it across. Can you see the chart now? Okay. This is the OI data. Now the OI data, this is a cumulative OI data, which we did in much detail in options mantra, जो weekend पे था. यहाँ पर there is a very sharp rise on the call side. This is call. Put side पे अभी भी कोई एक्टिविटी हुई नहीं है यहाँ पे because it's an OTM, it's an ITM put, which means there is no panic yet by the call sellers. There is no panic by call sellers yet.
Now that's not a very चार्ट दिख रहा है आपको आनंद? Okay, that's not a very good sign in terms of what I expected to see. Now, if Nifty gives a 15-minute close about 26,020. Okay, I'm just going to stop my screen share again. I'm again going to share it across. Let me just see. Are you able to see the chart now, Kumar, Deepak? Okay, Zoom का issue है आप लोगों का कुछ. I think my charts are visible here. So if these are call sellers. Okay, these call sellers, the OI data is still very high. The call sellers OI data is still very high, which is not very promising sign, which is not a good sign. So I'm going to be a little careful. Pehli cheez, I'm just going to read out my mind loudly. First thing, the movement happened after 3 p.m., which many times are unreliable. पहली चीज मैं वो ध्यान रखना हूं, थोड़ा सा कॉशियस रहना है. दूसरी चीज, 26,000 call sellers have not yet panicked, which means the fluorescent green shows they still are building position. They have not yet panicked. So I'm going to be little careful. 25,740 is the key, which should remain intact. Okay. Now, if this call seller starts panicking, if Nifty sustains about 26,030 level for 15 minutes, what I want is Nifty should show a follow-up strength. हो सकता है डायरेक्ट गैप डाउन हो, ऐसा मैंने देखा है बहुत बार. 3 बजे के बाद शार्प प्राइस आया, सबको कटवाया, वापस नीचे. सो थोड़ा सा केयरफुल होना है. लेकिन अगर गैप अप हो गया, गैप डाउन के बदले गैप अप, इफ निफ्टी शोज अ गैप अप and sustains for 15 minutes around 26,030 level. Can I say these people will panic? The big players who created short call positions will panic. There was no reaction time for them given this candle, and they expected it to be an average close. थोड़ा नीचे आएगा. Average close came around, I think 25,915 is the average close. Now these people are still optimistic कि ये एक spike था, and I also think possible है. If this happens, can I say it's going to be resulting into the next massive short covering by call sellers? So next massive short covering कैसे पता चलता है हमें? Nifty if sustains about 25,930 levels, it will result into massive short covering by call sellers. This can further drive prices higher. Okay, so OI data with NeoWave and time cycling are important. यहां पर ये सारी चीजों को हमें देखना है सिंपल वे से. Okay, so this is going to be an important data, and this is going to drive our prices in a very simple systematic fashion. Clear है? 26,030 मैं बोल रहा हूँ, 25,930 नहीं है भाई, 26,030 है. 25,930 के ऊपर कैसे होगा? एनी डाउट्स ऑन दिस? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आर यू विथ मी? So this is what we are looking at it. Now combining with this data, if I go back on my NeoWave chart, I'm going to go back on my NeoWave chart, and I'm going to apply a simple indicator, जो एक indicator मेरा custom indicator है again. Now if that's the case, okay, from my NeoWave perspective, everything is in sync. My wave F is over, my G has started, A and B is done, C is going to go up, and we need to see a break above this level. Once we break, these highs are going to be taken out. When these highs are going to be taken out, further short covering is going to trigger in, driving the market all over. Okay, unless 25,740 breaks.
लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी. डू शैल वी लुक एट बैंक निफ्टी? शैल वी लुक एट बैंक निफ्टी? क्या हो रहा है बैंक निफ्टी पे? इफ वी आर लुकिंग एट बैंक निफ्टी चार्ट, ओके, लेट्स जस्ट गो टू बैंक निफ्टी. बहुत टाइम से देखा नहीं हमने डेली चार्ट. बैंक निफ्टी का एक टाइम साइकिल है जो यहां पर आ रहा है. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? एंड बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है यार. टॉप क्यों पकड़ना है? कैन आई से बैंक निफ्टी दिस इज अ ब्रिलियंट टाइम साइकिल ऑफ बैंक निफ्टी. लुक एट हियर, लुक एट हियर, look at where we are entering again. Are you able to see the bank nifty chart? I'm showing you the bank nifty chart. Are you able to see it or not? There is some problem with the chart. Are you able to see it? The bank nifty chart, guys, can you put it across on the chat? And people on YouTube, join on the Zoom. Zoom पे अगर आप आएंगे तो क्लैरिटी दिखेगी आपको. ओके, विजिबल है. नाउ बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखता हूं तो क्या पैटर्न बना है? कौन सा पैटर्न है ये? आई एम आस्किंग एवरी वन ऑफ यू, ऑल द ब्रह्मास्त्र मेंटीज आल्सो हियर. आई एम आस्किंग यू a simple question. Do you see a pattern? Do you see a pattern? And can you say that this is head, this is shoulder here, and it is just there. मतलब रुका है खाली वहां पे. अगर ये निकल गया, ये जस्ट वहां पर रुका हुआ है. ओके, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. सो इफ दिस हैपेंस, इट कैन बी कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो आप. इट कैन बी अ accumulation. For this to be valid, move should not come below 58,100. 58,100 के नीचे नहीं आना चाहिए. अगर उसके नीचे आ गया तो गड़बड़ है. 58,100 के नीचे नहीं आना चाहिए तो गड़बड़ है. सो माई सपोर्ट लेवल इज 58,100 लेवल. मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए. मेरा प्रोजेक्शन कितना होगा अगर मैं हेड को मेजर कर रहा हूं? Projecting it on the upside from the breakout level, 59,960 is my target. 59,960. So मेरा टारगेट क्या हुआ? 59,960. मेरा स्टॉप लॉस क्या हुआ? What is my stop loss? My stop loss is going to be 58,160. 58,160. थोड़ा सा लीवे देके स्टॉप लॉस 58,100. एंट्री लेवल क्या होगा? एंट्री इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए. स्टॉप के साथ काम करना है. हमेशा याद रखना, रिस्क समझ के काम करना है. एंट्री क्या होगा? एंट्री के लिए मुझे 15 मिनट क्लोज चाहिए. थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाए इस लेवल के ऊपर. ये लेवल कौन सा है? एग्जैक्ट लेवल कौन सा है? 58,630. तो 58,630 चाहिए मुझे. कौन सा लेवल चाहिए? यहां पर बाय हो गया मेरा 58,630. ये स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है. मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है? व्हाट इज माय रिस्क टू रिवॉर्ड? इफ आई लूज 530 पॉइंट्स. इफ इट वर्क्स इन माय फेवर, ओके, इफ इट वर्क्स इन माय फेवर, हाउ मच आई एम गोइंग टू मेक? कितना होता है? हाउ मच आई एम गोइंग टू मेक? 1000 पॉइंट्स? मोर देन दैट? 58,630 minus 59,960 gives me 1330 points. My risk to reward is how much? 1:2.5. डुएबल है? कर सकते हैं क्या? मजा आएगा. तो समझना क्या है दोस्तों, यहां पर एक सिंपल सा चार्ट रखा है. मैंने आपको कुछ नहीं बताया. मैंने खाली आपको सिंपल से, बिना किसी फियर के, बिना किसी फोमो के, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया. वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ट्रेड दिखाया. इतना सिंपल होता है चीजों को कभी कभी करना. और अगर 58,100 ब्रेक हो गया तो यार मार्केट का मूड कुछ और है, कुछ और करने का है, तो वी विल बी आउट. दैट डज नॉट मीन इट डज नॉट वर्क. ऐसा नहीं होता है. ये पूरा रॉन्ग हो गया. फ्राइडे तक तो बुलिश थे, मंडे को बेरिश हो गए. आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. वन थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू, if market changes the trend,
निफ्टी 200 पॉइंट नीचे आ जाता है, मेरा व्यू बदल जाए। एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि मैं तो बुलिश था फ्राइडे को, मंडे को, सो आई कैन चेंज माई स्टैंड विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई। नाउ दैट कैन बी अ स्ट्रेंथ फॉर मी, दैट्स अ स्ट्रेंथ। आई डोंट केयर what everyone is thinking about me. What I care is what the chart is showing to me. And if that is the strength, it actually works because I am going to look at it and I am going to be trading basis of that. वाह, 40 मिनट हो गया यार, मुझे पता ही नहीं चला बातचीत करते हुए। Do you want to? I'm asking how many of you want to be learning about the science of trading completely, about options, combining that with wave patterns, combining with these kind of methods? आप लोग हो क्या जो सीखना चाहते हैं? Are you part of त्रिशूल प्रोग्राम और मेंटरशिप प्रोग्राम? वैभव, आप, मुझे पता है आप तो हो ही, मेंटरशिप में आप लोग हो। सो हमारा त्रिशूल प्रोग्राम है विच इज ऑन गोइंग राइट नाउ, यू कैन स्टिल बी अ पार्ट ऑफ इट। ऑप्शंस अगर आपको सीखना है तो त्रिशूल की लिंक दीजिए डायरेक्टर साहब सभी के साथ में, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ त्रिशूल और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र। मैं यहाँ पर त्रिशूल की लिंक दे दीजिए सभी के साथ में, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। लिंक पे जाना है, आप रजिस्टर कर सकते हो। हमारा सूत्र ऑफ वेव्स होने वाला है विच इज गोइंग टू बी हैपनिंग सून एंड यू आर गोइंग टू लव इट। साथ ही में मैं पूछना चाहता हूं कौन कौन लोग हैं यहां पर कल अवेलेबल मेरे साथ, जो मास्टर क्लास में जुड़ना चाहते हैं। कल सुबह विच इज 15 नवंबर एट 11 AM मास्टर क्लास में जुड़ना चाहते हैं, कौन कौन अवेलेबल है? आप लोग हो? जूम पे करेंगे, जूम की लिंक शेयर करेंगे सभी के साथ में। निफ्टी वो एलियट वेव सीखना चाहते हो, बेसिक एलियट वेव और प्राइस एक्शन। कल मैं आपको एक अलग चीज बताने वाला हूं, बहुत ही जबरदस्त। मॉर्निंग 11 AM, बट यू विल हैव टू बी देयर बिफोर टाइम, 10 मिनट बिफोर टाइम एज वी गो फुल। लिंक है, लिंक यूट्यूब पे भी शेयर करिए, एंड यहां पर लिंक आप यूट्यूब पे शेयर कर दीजिए सभी के साथ, एक कंफर्मेशन दे दीजिए मुझे। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक वेरी क्लियरली, आज कुछ सिखाया नहीं गाइस, आप लोग ने सीखा नहीं क्या आज कुछ भी? मैंने इतना सब बोल दिया, 45 मिनट से 45 मिनट से मैं बोल रहा हूँ। दीपक कुमार आप बोल रहे हो मैंने अगर नहीं सिखाया तो यार मैं फ्राइडे एट 4 कर ही क्यों रहा हूँ? मतलब मैं तो एक्साइटेड था कि भाई आप लोग आज कुछ सीख के जाएंगे, मैं तो उसी चक्कर में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अगर नहीं सिखाया तो आई एम सॉरी। अगर मेरा जो पैशन है, आई वॉन्ट एवरी सिंगल वन ऑफ यू टू लर्न फ्रॉम हियर, and I'm trying my best to give it across to you with levels, with things. I'm just asking with a poll if you are which part to financial freedom, अगर आप पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओपन फॉर क्वेश्चंस। जोरदार सिखाया सिखाया ना यार। ओपन इंटरेस्ट देखा, नियोवेव पैटर्न देखा, बैंक निफ्टी देखा, निफ्टी देखा, 5 मिनट का चार्ट देखा, टाइम साइकिल देखा। अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं क्या नहीं देखा आज, वीकली चार्ट देखा हमने। इफ आई हैव टू जस्ट ब्रीफ यू ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स डिड आई टॉक अबाउट टुडे, वी लुक्ड एट वीकली चार्ट, वी लुक्ड एट डेली, वी लुक्ड एट 15 मिनट्स, वी लुक्ड एट आवरली प्राइस एक्शन, 3 कैंडलस्टिक रूल देखा। Then we moved on to NeoWave pattern. I taught you about diametric pattern. B wave has taken lesser time than A wave. C has to come. I taught about that. Then we switched from there to open interest chart. We looked at what is the 26,000 open interest is doing. What's profile looking like? We looked at AK indicator. I talked about time cycle on a 15-minute chart, how the time cycle is working. And then we switched on to Bank Nifty, looking at an inverted head and shoulder. Simply imagine in just 45 minutes that you have spent with me, every single logic that I'm talking about is explained on the chart. It's there on the chart and it works. So सिंपल से अप्लाई करो। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्रह्मास्त्र, सर आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र, आप रह सकते हो यहां पर। तो यहां पर आप रह सकते हो बहुत ही सिंपली। तो सिंपल वे से यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। और you want to be a part of Trishul program, you can be a part of it, absolutely. लिंक आपके साथ शेयर किए, एंड किन किन लोगों ने वो लिंक मैंने जो कल के वेबिनार की शेयर किए रजिस्टर कर दिए? कैन यू गिव मी अ बिग थम्स अप प्लीज? Who all have registered for the webinar masterclass, free masterclass, which is tomorrow 15 November 11 AM? Have you registered for it? Okay.
हु इज योर गुरु फॉर NeoWave? माय गुरु फॉर NeoWave इज ग्लेन नीली, जिनकी बुक से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है वहां से। सो सीखा है, लर्निंग अ लॉट इन ब्रह्मास्त्र। लिंक फॉर ब्रह्मास्त्र ग्रुप प्रणीता परिनीता को प्लीज ब्रह्मास्त्र के बारे में बता दीजिए। आपका मूर्ति राव, यस आई नो यू विल बी हैविंग कल की लिंक। इट्स ओपन फॉर एवरीवन, इट्स ओपन फॉर एवरीवन। एंड यहाँ पर से आप देख सकते हैं। Fantastic, guys. So I'm taking a poll, and how many of you are joined the Trishul program? Can you just confirm back to me? Trishul में क्या क्या है सर, एक बार कंफर्म करेंगे। पेमेंट कैसे करना है, 10K का टोकन भी दे दीजिए उन्हें। पेमेंट कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। इफ यू आर हियर ऑन द पेज, यू हमारा ऑप्शंस मंत्र हो चुका है त्रिशूल का। सो ऑप्शंस मंत्र इज गोइंग टू बी एन ऑनलाइन वीडियो विद द डेट्स एंड एवरीथिंग विच हैज हैपेंड, सो यू कैन कम हियर। डायरेक्टर साहब NeoWave को ऊपर शिफ्ट करिए, ऑप्शंस मंत्रा को नीचे, सो दैट जो हमारा लाइव 6-7 दिसंबर। सो इफ यू आर अ पार्ट ऑफ त्रिशूल प्रोग्राम, त्रिशूल, वी विल गेट एन ऑनलाइन वीडियोस ऑफ ऑप्शंस मंत्रा। You will be getting the live sessions of 6th and 7th December, which is going to be on Sutra of Waves। 3 महीने का ये सेशन होता है, 3 महीने का आपका प्रोग्राम होता है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल बी लर्निंग अक्रॉस दैट्स त्रिशूल एंड ब्रह्मास्त्र। यू विल बी लर्निंग everything that we are doing Brahmastra. So fantastic, guys. Simply super. यहाँ पर fantastic. तो आज I think आज बहुत सारी चीजें हमने की है। It was lovely speaking to you all, and it was wonderful. The I'm going to see you tomorrow, every one of you, and thanks for joining me, listening me out. People who are there on YouTube, give me a thumbs up that you are enjoying this session. Put down your comments down there. लिंक पे क्लिक करना, कल जुड़ना भूलना नहीं जो जूम पे होगा। एंड फॉर एनी हेल्प रिक्वायर्ड यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट माई टीम। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।